Here are our top stories for today, spanning major political promises, shocking accidents, brutal crimes, cultural debates, and international diplomacy. Hello, I'm Khyati Rajvanshi, and you're watching The Indian Express. Let's get started. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has set an ambitious target of securing over 215 seats in the 2026 West Bengal Assembly elections. She asserts that her party, the Trinamool Congress, will ensure a significant reduction in the BJP's tally. Watch our full report here. আর ইসবার ওই বলেছিল না আগের বার এসে ইসবার 200 পার আর দিল্লিতে বলেছিল এসবার 400 পার হিসেবটা মিলিয়ে নেবেন ইসবার কি করবে তৃণমূল কংগ্রেস অভিষেক যেটা বলেছে অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট আমি ওইটাই মেন করতে চেয়েছি আমি সবটা বলি না ওরা যেটা বলতে পারে আমি সেটা বলতে পারি না কিন্তু আমি বলেছি 2/3 মেজরিটি তো থাকবেই তার বেশি আপনাকে নিয়ে আসতে হবে বিজেপির জামানত জব্দ করতে হবে আর ইসবার ওই বলেছিল না আগের বার এসে ইসবার 200 পার আর দিল্লিতে বলেছিল এসবার 400 পার হিসেবটা মিলিয়ে নেবেন ইসবার কি করবে তৃণমূল কংগ্রেস অভিষেক যেটা বলেছে অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট আমি ওইটাই মেন করতে চেয়েছি আমি সবটা বলি না ওরা যেটা বলতে পারে আমি সেটা বলতে পারি না কিন্তু আমি বলেছি 2/3 মেজরিটি তো থাকবেই তার বেশি আপনাকে নিয়ে আসতে হবে বিজেপির জামানত জব্দ করতে হবে এবারে জামানত জব্দ করার পালা আর মিথ্যের কাছে আত্মসমর্পণ নয় বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর জামানত জব্দ করুন আর বাংলার মাকে এগিয়ে যেতে দিন বাংলার ভাই বোনদের এগিয়ে যেতে দিন বাংলার সম্মানকে নিয়ে যারা অপমান করে বাংলার সংস্কৃতিকে যারা অপমান করে রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ রবীন্দ্র নজরুল আম্বেদকরকে যারা অপমান করেন বিরসা টিরকা থেকে পঞ্চানন বর্মা প্রমথনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে যাদের অপমান করে তাদের জন্য কোনো জায়গা বাংলায় নেই আসল খেলা ভোটার লিস্ট থেকে শুরু ঠিক আছে খেলা নাম্বার 1 ভোটার লিস্ট খেলা নাম্বার 2 মানুষের সাথে যোগাযোগ করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংযোগ স্থাপন করা খেলা নাম্বার 3 সংগঠনকে শক্তিশালী করা এলাকায় কারা আসছে নজর রাখা এলাকায় যাতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে নানা রকম আমদানি রপ্তানি হচ্ছে সেটা যাতে না হয় নজর রাখা কোনো দাঙ্গা যাতে না হয় নজর রাখা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকে নজর রাখা কোনো মানুষের উপর কোনো অত্যাচার না হয় নজর রাখা আর খেলা নাম্বার 4 বিজেপির হবে হার A 5-year-old in Madhya Pradesh is battling for her life after a horrific sexual assault. Doctors at Gwalior's Kamla Raja Hospital said she needed 28 stitches in her private parts and an operation for colostomy. The accused is a 17-year-old who has been arrested and is being tried as a juvenile, the police said. The police also said that the accused, apparently drunk at the time, had slammed her head against a wall several times and then brutalized her. Apart from the head injuries, her body and private parts bore multiple cuts and scratches and bite marks. In other news, a 26-year-old woman was allegedly raped inside a stationary state transport bus at Pune's Swargate bus station on Tuesday morning. The accused, Dattareya Ramdas Gade, a 36-year-old with a history of theft, robbery, and chain snatching, is currently absconding. Here is a full report on the story. Dattatraya Ramdas Gade, a 36-year-old with a history of criminal record out on bail since 2019, allegedly raped a 26-year-old woman inside a stationary state transport bus at Pune Swargate bus station on Tuesday morning.
Here is what we know about him so far. Gade has a criminal record with multiple cases of theft, robbery, and chain snatching registered against him in Pune and Ahilyanagar district. In 2024, he was also booked in a theft case in Pune and was summoned by the police. Following the incident, Nationalist Congress Party SP leader and Baramati MP Supriya Sule criticized the BJP-led Mahayuti government, while Deputy Chief Minister Ajit Pawar directed the Pune Police Commissioner to ensure a swift investigation and arrest of the accused. The shocking incident triggered a protest by the opposition Shiv Sena UBT, during which the security office on the premises was vandalized. Here is what exactly happened. 5:30 पौने 6 बजे के दरमियान स्वारगेट बस स्टैंड पे बैठी थी, बस के लिए वेट कर रही थी। तो दैट टाइम ये जो आरोपी है ये इसके पास आया है, उसने उससे पहचान कर खुद का मतलब पहचान बढ़ाई है और फिर उससे पूछा कि दीदी तुम कहाँ जा रही हो, ऐसा मीठा मीठा बोल के उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई कि वो कहाँ जा रही है। और जब उसने बोला कि मुझे फलटन जाना है तो उसने बोला कि फलटन की बस तो वहाँ पर लगी हुई है, आप यहाँ क्यों बैठे हो, चलो मैं आपको बिठाता हूँ। तो लड़की ने बोला कि इधर ही लगती है, तो बोला नहीं मुझे पता है, बोले मैं 10 साल से यहीं पर रहता हूँ। तो वो उसको मीठा बोल के वहाँ पर लेके गया। तो लड़की ने पूछा कि बस में तो अंधेरा है, तो उसने बोला कि ये रात की लेट हुई थी बस, वो अभी है, वो अभी निकलने वाली है, तो आप चाहे तो ऊपर जाके टॉर्च से देख लो वहाँ पर लोग है या नहीं है करके। तो ऐसा बोल के उसने बोला कि ऊपर जाके देखने के लिए बोला, तो लड़की ऊपर जाके टॉर्च से देखने लगी। दैट टाइम वो अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया, फिर ये सब उसके साथ जबरदस्ती की उसने। उसके बाद ये आरोपी सीसीटीवी में दिखता है कि लड़की उसी के साथ जा रही है वहाँ पर बस तक, वो सब दिख रहा है। और उसके बाद जब ये हुआ तो उसके बाद लड़की भी वहाँ से निकली है और वो अपने गांव जा रही थी। तो बीच में उसने अपने एक फ्रेंड को फोन करके बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके फ्रेंड ने उसको बोला कि नहीं तू वापस जा और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर। तो वो लड़की यहाँ पर आई पुलिस स्टेशन में और उसने हमारे पास ये कंप्लेंट की। उसके बाद हमने इमीडिएटली सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला, सब ट्रेस आउट किया। उसमें जो आरोपी है वो पहचान लिया गया है, वो निष्पन्न हुआ है इसमें। और उसको ढूंढने के लिए कल से क्राइम के जोन के सब मैक्सिमम 8 टीम्स यहाँ पर कल से काम कर रही है। डॉग स्क्वाड भी भेजा गया था, वहाँ के खेत खलियान सब जगह पे उसको ढूंढ रहे हैं। मैम किन धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और क्या आरोपी आइडेंटिफाइड हुआ है अब तक? ये बीएनएस के अंतर्गत किया गया है, ये किया है। और आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन आरोपी की पहचान हुई है, उसका डिटेक्शन हुआ है। उसका नाम है दत्तात्रेय रामदास गाड़े करके, उसका एज है 36 to 37 के हिसाब से। Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has voiced strong opposition to what he calls the monolithic Hindi identity imposed through the national education policy. He claims that Hindi has swallowed regional languages, leaving many gasping for survival. In a letter he wrote, and I quote, "Will oppose Hindi imposition. Hindi is the mask, Sanskrit is the hidden face." End quote. At the UN Human Rights Council in Geneva, India dismissed Pakistan's allegations of human rights abuses in Jammu and Kashmir as baseless and malicious. Indian diplomat Kshitij Tyagi criticized Pakistan for harboring terrorists and misusing the OIC for propaganda, emphasizing progress in J&K and reiterating India's sovereignty over the region. Watch our full report here. At the 7th meeting of the 58th session of the United Nations Human Rights Council on Wednesday, India strongly rebuked Pakistan's allegations regarding human rights abuses in Jammu and Kashmir. Indian diplomat Kshitij Tyagi dismissed Pakistan's claims of suppressing democracy and violating human rights in the region as baseless and malicious, adding that Pakistan itself is rife with human rights abuses and is in no position to lecture others. India is exercising its right of reply in response to the baseless and malicious references made by Pakistan. It is regrettable, yet unsurprising, to see Pakistan's so-called leaders and delegates continuing to dutifully spread falsehoods handed down by its military terrorist complex. Pakistan
is even making a mockery of the OIC by abusing it as its mouthpiece, which is fooling nobody. We do not wish to dignify such propaganda, but are constrained to make a few simple points for the record. First, the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always remain an integral and inalienable part of India. Second, the unprecedented political, social, and economic progress in Jammu and Kashmir in the past few years speaks for itself. These successes are a testament to the people's trust in the government's commitment to bring normalcy to a region scarred by decades of Pakistan-sponsored cross-border terrorism. Third, as a country where human rights abuses, persecution of minorities, and systematic erosion of democratic values constitute state policies, and which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead of its unhealthy obsession with India, Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. Mr. President, it is unfortunate that this Council's time continues to be wasted by a failed state, which thrives on instability and survives on international handouts. Its rhetoric reeks of hypocrisy, its actions of inhumanity, and its governance of incompetence. India remains focused on democracy, progress, and ensuring dignity for its people, values that Pakistan would do well to learn from. I thank you. Earlier, Pakistan's Minister for Law, Justice and Human Rights, Azam Nazir Tarar, had addressed the Council accusing India of denying the right to self-determination to the people of Kashmir. This is what he said. In Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, the denial of Kashmiris' right to self-determination is making a mockery of UN Charter, UNSC resolutions, and international law. Meanwhile, sham elections and promises of investment are put forward to accuse demographic engineering and population transfer into the occupied territory. Pakistan requests the High Commissioner's Office to continue monitoring the situation and update its Kashmir reports. We urge the Council to establish a commission of inquiry recommended by Office for a thorough investigation into the utter disregard for human rights of Kashmiri people in Indian-occupied Jammu and Kashmir. That's all for today, but leaving you with visuals of Srinagar receiving fresh spell of snowfall.